central bank. So, with the central bank, every country has a central bank whose main job is to supervise the banking system in the country. Okay, they oversee all kinds of commercial banks and their activities. In fact, let's list down the main activities of a central bank. First and the foremost is to supervise the commercial, okay, to supervise the financial framework, including the banking system. Second, and the most important one also, is printing of money and minting of coins that are legal tender. लीगल टेंडर का मतलब कि ये एक गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल चीज़ है. दैट्स वाई इट हैज़ ऑल दी स्टैम्प्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट. उसके अलावा सेंट्रल बैंक का रोल है इन सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट rate. All right, interest rates. Now, this is what happens. Now, remember one thing: interest rate, how does it work? Central bank एक इंटरेस्ट रेट सेट करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इसको लेट्स से काइबोर बोलते हैं. काइबोर इज कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट. ठीक है, काइबोर कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट. लेट्स से दैट इज सेट एट 7%. But when I go to the bank that I need money to buy a car, what the bank offers me is Kaibor plus 2%. Do you understand this? Bank is going to offer me Kaibor plus 2. That means the bank is giving me 9% on it. 2% is commercial banks extra money that they keep for providing you with certain services and all. Okay, so if the central bank raises the interest rate, what's going to happen? If the central bank increase the interest rate, well, if central bank increases the interest rate, the banks are going to increase the interest rate on me, and as a result, what's going to happen is that borrowing will be expensive ठीक है, and as a result there will be less borrowing and less spending. Do you understand that? This is what's going to happen as a result of it. On the other hand, if they decide, so at this, in a similar way, if there is a reduction in interest rate, opposite will happen.
uh, borrowing will rise and spending will rise. We're going to talk a lot more in detail regarding these policies. Uh, so ये तो हमारा हो गया interest rate के through they can uh, you know have an effect on the economy. Other than this, you also have a major activity जिसको हम बोलते हैं the monetary policy. Monetary policy is about the central bank determines the quantity of money in circulation. Every now and then न्यूज़पेपर के अंदर आता है सेंट्रल बैंक 1 मिलियन रुपीस जो है इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करेगा सर्कुलेशन के अंदर. ऑब्वियसली मोर मनी मीन्स मोर बोरोइंग एंड मोर स्पेंडिंग. तो ये भी एक तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी है. एंड सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है. मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई ये दोनों इंक्लूसिव है. देयर आर टू थिंग्स टू इट. इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जाता है. A couple of more important functions would be that they monitor and manage नेशनल डेट. मुल्क का कर्जा कितना लिया है, कितना वापस करना है, उस सब चीज़ों का हिसाब सेंट्रल बैंक रखेगा. उसके अलावा दे आर ऑल्सो गोइंग टू मैनेज द international financial system. What do I mean by that is like your dealings, जैसे पाकिस्तान के साथ होता है dealings with IMF, International Monetary Fund, जिससे हम पैसा बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ, and setting of foreign currency value.